evening, gentlemen. Wonderful time. A lot of people have approached me and said, Captain, you've been talking a lot of things about Ukraine. You've been talking about Gaza, the Hamas and Israel. But about India? Very true. It's about time to talk something about India. दोस्तों, आप जानते हो कि एक इलेक्शन ड्यू है, which is समझिए कि एक सेमीफाइनल है, but definitely it's not a mini general election. And whatever is going to happen in this election doesn't mean it's going to be duplicated in the general election. But gentlemen, there is an election on to 5 states in India now. The Election Commission has given the dates, and so the ball is in full swing. And what are those states? They are Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Telangana and Mizoram. These 5 states will be going to the polls to elect these state assemblies, because so far the proposal of Mr. Narendra Modi and his offer to the Congress and the opposition to have one general election for Parliament as well as the states has not been accepted. So the same rigmarole is to continue, but the stakes are high, let's accept that fact, because the state governments will be controlling these states through their parties if they win the election now, and that will have a bearing on the general election due in 2024. But that, as I've already said, doesn't mean that what is going to be happening in, say, in these 5 states is going to happen in the general election. The Indian voter is pretty discerning, और उसको मालूम है मैंने किसको वोट देनी है और किसको वोट देनी है जनरल इलेक्शन में और किसको वोट देनी है स्टेट इलेक्शन में. ये जो 5 इलेक्शन हो रही हैं, इसमें बाकी ऑपोजिशन पार्टीज तो कहीं नाम निशान नहीं है उनका. एंड द ओनली 2 पार्टीज विच रियली मैटर नाउ आर द कांग्रेस एंड द बीजेपी. Now that is a very important point. The Congress and the BJP are going to lock horns in these elections. While in one of the states, that is in Telangana, you got KCR, leading the charge forward. He was the man who was instrumental in the creation of Telangana. He's been in power for 10 years, and let's see whether he can win again. I'll tell you what is my observation, and don't take it as a gospel truth, but I think this is what's going to happen. First of all, as far as Mizoram is concerned, I think it's not that important who wins, because these Mizoram sent only 2 seats to Parliament. And maybe the local party might win, or whoever wins it doesn't have a bearing on the center. It's a very small state also. And next after that we come to Chhattisgarh. Now here, the general pundits are that the men who matter have conceded the Congress is going to win. बघेल जो है वो फिर से जीत जाएंगे. पर मेरी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है, एंड आई फील कि बीजेपी का बहुत अच्छा चांस है टू कम बैक टू पावर इन छत्तीसगढ़. डॉक्टर रमन जो पहले चीफ मिनिस्टर 3 टर्म्स में रह चुके हैं, आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू बी द लीडर अगेन. और परहैप्स उन्होंने कुछ गलतियां की जिसके कारण बीजेपी तकरीबन डेसिमेट हो गई. दे वर डिफीटेड वेरी बैडली इन छत्तीसगढ़. तो अब क्या होने वाला है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी विल गिव गुड फाइट एंड इट विल बी अ वेरी क्लोज इलेक्शन. मे बी द बीजेपी could win about 45 seats, and the opposition, that is the Congress, could win about 40 seats, but we have to wait and see. So it's a close combat, and let's see who's going to win. The next election which is going to take place is in the stronghold of KCR, and that is Telangana. Telangana, as you all know, was the backward part of Andhra Pradesh, and it was an important part, and the only thing they had at that time was the city of Hyderabad, which was in their kitty. It's still their capital. And KCR has been ruling the roost ever since the state was formed.
But I think he's lost his sheen. That shine has gone off. क्योंकि उनकी जो बेटी है वो बहुत सी करप्शन चार्जेस में इन्वॉल्व हो गई है. आई डोंट से दे आर ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, मे बी ट्रू, वी डोंट नो, बट एलिगेशंस आर देयर, और एलिगेशन जो है कई बार स्टिक कर जाती है. इस कारण जनरल परसेप्शन जो है लोगों के बीच में, आवाम में, इज दैट KCR इज टेंटेड मैन विद करप्शन, and he is also having national aspirations to become the Prime Minister of India. But I don't see how he can reach any another post, because Telangana sends only 14 members of parliament to the Lok Sabha. तो 14 मेंबर लेके आप कहीं भी कोई चांस नहीं है कि आप निकल जाएंगे आगे. और इस बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की एक रेनिसेंस हो रही है यहाँ, एंड कांग्रेस में वेरी वेल विन दिस इलेक्शन. अगर कांग्रेस जीत जाती है तो देर इज़ ए वेरी गुड चांस दैट इट विल बी ए फेदर इन द कैप ऑफ राहुल गांधी, एंड डेफिनेटली वी मस्ट कंग्रेचुलेट हिम इफ ही विन्स. Or there could be a tie-up between Congress and KCR later on, and we don't know how the permutation combination take place. But the BJP has not lived up to its expectations as far as Telangana is concerned. Next I will discuss is Rajasthan. Now Rajasthan has been ruled by the Gehlot family for a long time. He is a very charismatic man. He has his ear to the ground, he listens, and he's in a majority as it stands today. But there's a lot of dissension in the Congress, and the one to watch out is Rajesh Pilot. I think he's feeling very disgruntled. He probably would have joined the BJP long time back if he had some support. We didn't have the necessary support to break the iron citadel of Gehlot. But as it stands, the BJP is also not in a very happy position. They've tried to sideline Madam Scindia, who has been in the forefront for a long time. In fact, it was a bit of a surprise that her name didn't feature in the first list which was set out. And her name came only in the second list. तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सोच रही है कि किसी और आदमी को चीफ मिनिस्टर का क्राउन देना चाहिए. Probably it could be, I don't know, Colonel Rajavardhan ji, who had won the gold medal in the Olympics also. तो let us see. वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पर उनको अभी स्टेट इलेक्शन में उतार दिया. सो बैटल तो बहुत तगड़ा होगा, पर हो सकता है, एंड आई हैव अ फीलिंग कि मेरी जो रिपोर्ट्स मुझे शो करती हैं कि बीजेपी विल विन राजस्थान. तो अगर बीजेपी राजस्थान जीत जाती है तो इट विल बी नथिंग सरप्राइजिंग, एंड इट विल बी ए फेदर इन द कैप ऑफ नरेंद्र मोदी. Next we have going to have the election is in Madhya Pradesh. Now Madhya Pradesh is an important state, sends about 28 members to the Lok Sabha. Rajasthan sends 25. And though as I've already said that जो भी जीतेंगे यहाँ doesn't mean कि वही replicate performance होगी in the national election. That's not going to happen. The Indian voters बहुत mature है. But these elections are important in their own way. और चैलेंज जो लीड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वो है कमलनाथ. मैं इफ़ यू आस्क मी, आई हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मिस्टर कमलनाथ. बहुत अच्छे आदमी हैं, छिंदवाड़ा के हैं. लॉट ऑफ माय डिस्टेंट रिलेशन छिंदवाड़ा में रहते हैं, एंड दे वाउट से कि इन्होंने बहुत काम किया वहाँ. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने हिंदुत्व से दूरी नहीं की, और बहुत से हिंदू संत और बगेश्वर बाबा भी जबलपुर के, दे आर हिज सपोर्टर्स. So he is a very pragmatic man and a very formidable man. In contrast, the BJP has got a very lackluster man. शिवराज चौहान अच्छे आदमी हैं, that's about all you can say about him, but एक charismatic leader नहीं है. And मेरे ख्याल में 15 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, but his performance in these 15 years has been, I think, not up to the mark. बस इतना ही कह सकते हैं हम. तो यहाँ भी बड़ी तगड़ी फाइट होगी. हो सकता है सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती अगर वो सिंधिया को यहाँ उतार देते फॉर द लोकल इलेक्शन, बट ही हैज नॉट बीन ब्रॉट इन.
So obviously they have the Modi and the think tank have some different opinion how to deal with it in Madhya Pradesh. They have not also announced that Shivraj Singh Chauhan will be their next chief minister. तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ गोइंग टू बी ए बैटल बिटवीन इक्वल्स. जैसे मोहम्मद अली थे एक तरफ थे और सोनी लिस्टन थे, एंड ये ऐसी फाइट चलेगी, एंड वील हैव टू वेट एंड सी कि कौन जीतता है. Whoever wins will win by 2 or 3 seats only. और फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, उसमें बीजेपी पास मास्टर हैं एंड देयर इज गुड चांस बीजेपी जीत सकती है. तो जेंटलमैन, ये सब स्टेट्स की मैंने आपको दाद दे दी है. एक स्टेट जो है राजस्थान, वो लगता है कि बीजेपी के बैग में जाएगी, एंड दो स्टेट्स जो दूसरी हैं, दैट इज़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी, एंड कोई भी पार्टी जीत सकती है, बट जो भी जीतेगी उसकी मेजॉरिटी 1 या 2 सीट्स की होगी. एंड तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी वापस आएगी. मिजोरम में लोकल पार्टीज जीतेंगी. सो सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग है. ये बहुत अच्छा होता अगर बीजेपी 4 में से 5 स्टेट्स में जीत जाती, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो भी अपने डंडे इकट्ठे कर रहे हैं लड़ने के लिए, और उनको मालूम है कि इस बार अगर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर हम हार गए बीजेपी से और बीजेपी 5 साल के लिए और पावर में आ गई तो हम खत्म हो जाएंगे, एंड दैट्स ए फैक्ट. दे विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सीन. सो जेंटलमैन, टू अवॉइड दैट द कांग्रेस एंड द अपोजिशन हैव टू शो सम मोर स्मग. पर कांग्रेस जिन स्टेट्स में इस बार अच्छा परफॉर्मेंस देगी, ये 3 स्टेट्स में, इट वॉज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इन दीज स्टेट्स, एंड नो अदर पार्टी, जनता दल और ये वो जितने भी हैं पैराफर्नेलिया, दे हैव एनी स्टैंडिंग और लोकल स्टैंड आई देयर. सो ये इलेक्शन बेसिकली 1-to-1 फाइट है बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी, एंड इट विल बी एन इक्वल फाइट. सो जेंटलमैन, लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस. As I've said, BJP should have done better, but unfortunately it's not going to do better, and it may win with a razor thin majority in Madhya Pradesh, though it will have a comfortable majority in Rajasthan. Chhattisgarh is touch and go, and then we have Telangana, where the Congress will come, and KCR unfortunately has cooked his own goose. एक तो KCR जी जो है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, एंड लोगों के माइंड में ये भी आ गया कि ये आदमी डबल क्रॉसिंग टाइप ऑफ आदमी है. रिसेंट जो हैदराबाद की इलेक्शन हुई थी, एट दैट टाइम ही वांटेड टू जॉइन द एनडीए बीजेपी के साथ, फिर जाके उसने हाथ ओवासी जी के साथ मिला लिया. नहीं, पार्ट ऑफ द गेम, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट द फैक्ट इज ही इज द पर्सन हु इज अंडर प्रेशर, एंड हिज डॉटर हैज बीन इन्वॉल्व्ड और इज बीन allegedly involved in a lot of corruption scandals. And as far as the other parties are concerned, आम आदमी पार्टी वगैरह तो इनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है. ये कहते हैं ना, ऑल्सो रैन ये वो कहानी होगी, ये भी इलेक्शन में खड़े हुए थे. सो जेंटलमैन, लेट्स वेट एंड सी. दिस इलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट in the sense that it will be a pointer to the popularity of the BJP. That's number one. But at the same time, it doesn't mean that the BJP is going to do badly in the 2024 election. And I'm pretty sure at that time, whatever the results are in these states, the BJP will, in these states, win the majority. Gentlemen, I think close now and say goodbye to you all. अगर वक्त मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, and share it with your friends, and come back for more. I'll tell you a lot of more things. The news, you can read in the newspaper and the other channels. I'm giving you an assessment, and my assessment is generally correct. So what's the end result? I think this battle is going to be a draw in these 5 states. And whoever wins will win on points, like it was Muhammad Ali and Joe Frazier. Goodbye and God bless. And I will close and say, Jai Hind, take care of yourself.